सो वेलकम टू अनदर वीडियो गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, जो मैं आज आपके लिए वेबसाइट लेकर आया हूं वो बहुत ही अमेजिंग वेबसाइट है। उस वेबसाइट का नाम है sketchtologo AI। यहाँ पर जैसे लिखा है क्राफ्ट लोगोस इन सेकंड्स विद AI, मतलब यहाँ पर आप लोगोस इन सेकंड्स में क्रिएट कर सकते हो AI के थ्रू। इस वेबसाइट में बहुत कुछ हमें देखने को मिल जाता है, जैसे कि तो आपने इस वेबसाइट में आना है और आप हाथ से कुछ भी ड्रॉ करके आप उसको प्रोफेशनल लोगो क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर जैसे लिखा है स्केच इट लेट जनरेटिव AI परफेक्टेड। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इसने एक नॉर्मल सा एक स्केच क्रिएट किया है, जिसको इसने ये इस लोगो में कन्वर्ट करके दे दिया हमें। तो और भी हम नीचे देखते हैं जैसे, और यहाँ पर जैसे ये इमेजेस हैं, आप यहाँ पर डिजिटल इमेज क्रिएट कर सकते हो स्केच के थ्रू। चाहे आपकी ड्राइंग अच्छी ना हो, लेकिन आप नॉर्मल स्केच ड्रॉ करके प्रोफेशनल इमेजेस और लोगो क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका कोई पुराना लोगो है तो उसको भी आप नया लोगो डिजाइन कर सकते हो पुराने लोगो को कन्वर्ट कर। जैसे यहाँ पर बहुत सारी ऐसी इमेजेस है, आप देख सकते हो जहाँ पर ये स्केच ड्राउन किया हुआ, यहाँ पर ये लोगो क्रिएट कर दे दिया है। और यहाँ पर जैसे ये रिव्यूज वगैरह हैं, तो यहाँ पर जैसे एक वीडियो अपलोड है, तो मैं इसी को ही प्ले करने वाला हूँ। Hi, today I'm going to show you how to create logos without relying on prompts and just building from scratch with sketchtologo AI. So as you can see, there are different tools you can use to create your design on top, and I'm choosing the shape circle and erasing the bottom and adding these fins to create this jellyfish with a bowl hat kind of look. So we are going for a very unique design, and I'm using the icons. You can also choose how you want them to look, thin, light, regular, solid, and I'm mostly choosing regular. And then just writing my prompt, which sounds confusing, but with the generative power of AI, it's really not. After that, I'm going to choose my creativity strength, and I'm going to decrease it a little bit and just hit the generate button, and here are the results. After checking them out, I'm going to clear everything and choose the design I want to go with, and go into icons and write astronaut to place it into my design. Now I just want to use my sketch tool to combine these two and create the image I have in my mind. And I'm adding more fins, and you can also erase your sketch and edit it out. I'm also making sure that astronaut is like a whole piece. Then I'm adding astronaut with fins into my prompt and choosing the influence level. Now all I have to do is change the creativity strength just a little bit to see what will come up. Now we have 4 unique designs, and I'm choosing which one to go with. By using the sketch tool, I'm adding simple dots to create this look of stars. And also I'm changing my prompt by adding stars and changing the influence level of some birds. Lastly, I'm just decreasing the creativity strength just a little bit so that I can get similar outputs to my current design. At this point, I'm just trying to show you what you can do with all of these tools. Lastly, I'm adding a circle around my design and just lowering the creativity strength to turn this into a logo shape. This is our final design, but I just want to show you how cool it looks with a 3D version. For the last time, I'm changing the prompt, creativity level, and content style, and here are our results. So this is pretty much how to turn your sketch into a logo design with sketchtologo. तो जैसे आपने देख लिया होगा कि यहाँ पर हम कैसे जो है स्केच से लोगो क्रिएट कर सकते हो, और आप इवन 2D लोगो को 3D लोगो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हमें इमेज जनरेट करनी है, लोगो डिजाइन करना है, तो हम स्केच के थ्रू यहाँ पर इसको क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने ये भी देखा कि आप प्रॉम्प्ट देकर आइकन सर्च कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए।